हेलो फ्रेंड्स, आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल। आप सब लोगों के लिए ओवरऑल मार्केट में जो सिनारियो तो चेंज होता ही रहता है, और इस बार जो चेंजेस मुझे दिख रहा है, वी आर मूविंग टू हायर वोलेटिलिटी। काफी टाइम बाद आई हैड टू टेक सम लॉस इन इट, एंड the aggression, the initial aggression of mine in some of the indices, especially largely the European indices, did not work. It was a sharp comeback after being I added more being aggressive. It was a very sharp comeback. But once a loss is hit a certain threshold, we have to move quick enough and to cut down the loss so that we can play in the future and add more quantities again. Things are becoming very, very interesting now. We are definitely moving into a consolidation. एक तो consolidation का पिक्चर चल ही रहा है। S&P काफी टाइम से सेल ऑफ दिखा रहा था, बट आई ये S&P में मैंने एग्जिट कर लिया। Nasdaq, but I was a bit of aggressive on the euro, so probably that's why I did not exit, and ultimately I had to take on some loss. So here is the recovery is happening. S&P 500, it is exactly from this level जो मैंने expect किया था, exactly देखिए उसी level के आसपास ये flat line, it is coming back. Straw और ये माउंटेन टॉप के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। सो वंस आई गेट अ बाई सिग्नल, इट कुड बी गुड टू गो। लेट्स सी कैसा जाता है फर्दर, तब जाके क्लैरिटी मिलेगा फर्दर की क्या हो रहा है। सो आई वेट फॉर अ बाई सिग्नल इन दिस वन। तो लेट मी मेक इट बिगर ताकि आप सब लोग देख सके। सो बाई ट्रेड का इस जीतने का चांस ज्यादा है, 68% विन प्रोबेबिलिटी। बाई सपोर्ट, बाई ब्रेकआउट ही ट्रेड है। एक फुल ग्रीन कैंडल का इंतजार है। वंस इट कम्स विल बी रेडी टू गो, बट जिगजैग वोलेटिलिटी बढ़ चुका है मार्केट में दोनों साइड। इफ यू आर नॉट केयरफुल विद आवर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, वी माइट गेट लॉस, and not loss, bigger loss. Loss is not a problem, loss is part of the game, but we don't want to make it too big. Dow Jones exactly reach our target and gave an exit after that. If you bring down the candle, it exactly reach the flat line, और वहीं से क्या what a buying came from the exactly you flat line के आसपास से। So Dow reached the target thankfully and then bounce back. So it could be bigger consolidation, 54% chance कि buyer जीतेगा, 50% chance consolidate होगा। सेलर्स का जीतने का चांस बहुत ही कम है। नो पॉइंट गोइंग रिमेनिंग ऑन द शॉर्ट साइड। Nasdaq, I should have exited Europe as well, but that is only we can see in the hindsight. So this is Nasdaq. Nasdaq, it's looking like will be sustaining above the level, and we might get a good another round of buy chance. मैंने बोला था कि this sell I don't expect it to be the crash leg. I think it is still we are not there, and it is consolidating in this area, and further अगर इसको सपोर्ट बनाया इस फ्लैट लाइन को, further rise would be very likely in Nasdaq. Then we are taking a look at the Russell. Russell is US का small and mid cap index मान सकते हैं हम लोग। Let me adjust. Russell remains bearish, but overall हम लोग consolidation का probability बढ़ चुका है। These are the levels for Russell. So overall equity is coming back. Russell में भी come back आएगा। We will not remain on the short side. I'll not prefer to remain on the long side either. Now I'm going on to Asia. Asia में जा चुके हैं हम लोग। And Asia में this is the Nifty 500. It is a comeback of the bulls, but I don't have a full green candle yet. White cross is outside the candle body. Currently, it is more in a better avoidance situation. Then we are looking at Vietnam, that is also in Asia. It is under selling pressure, more of a range bound. Look at the probability. No one has a clear edge of winning. South Korea have been facing sell off for quite some time, but sell off अब जाके थोड़ा बहुत end हो रहा है लग रहा है। Consolidation probability बढ़ चुका है। Sell trade win probability has declined.
We are taking a look at New Zealand. New Zealand is making a comeback, stronger comeback. न्यूजीलैंड के आप वीकली चार्ट को भी रेफर कर सकते हैं. वीकली में न्यू कमबैक एज यू कैन सी, एंड आल्सो अ न्यू कमबैक इन द डेली चार्ट. सो न्यूजीलैंड लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो न्यूजीलैंड में हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं बाय ईटीएफ. ENZL is the ETF ticker. Australia is a mixed market, not ready yet. Thankfully, I exited Nikkei. Otherwise, अच्छा जगह पे as expected. Looking at this as looking की bounce back आने का chance दिखा रहा था. Now it has moved above this flat line level. So selling pressure is now going to, sellers are going to struggle more. Look at the buy trade when probability बढ़ चुका है. But I need a full green candle to go long in Nikkei. So currently wait करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते. चाइना में भी मैंने अपना शॉर्ट कवर कर लिया, तो चाइना वी डोंट, बट ओवरऑल इक्विटी में कमबैक देखते हुए आई हैव आल्सो स्क्वायर्ड ऑफ इन चाइना. एंड लेट्स लुक एट नेदरलैंड्स. Comeback, but do not a buy signal yet. I think same picture. Italy, comeback of the bulls, but not a strong buy yet. Full red candle, maybe further गिरेगा, it's possible है correction के बाद. But I don't have a buy either, so it's more of a stay away market everywhere. जो दिख रहा है indices में. This is UK, sorry, CAC 40 once again selling pressure. Rather थोड़ा बहुत इंडिविजुअल इंडिसेस में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट इट्स मोर ऑफ अ मिक्स अक्रॉस द ग्लोब. यूके वंस अगेन देखिए, नाइदर रेड कैंडल नाइदर ग्रीन कैंडल, इट्स अ मिक्स पिक्चर. तो कंसोलिडेशन में जाने का चांस ही ज्यादा है. इसमें पैसा खोते हैं सबसे ज्यादा लोग कंसोलिडेशन में. क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता, तो इस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट यानी छोटा क्वांटिटी and also staying away from the market is better. You can't bet money all the time and expect to make money. So you have to know when to remain in the market and when not to remain in the market. But individually stocks we can definitely take a look at. But overall जो मुझे पिक्चर दिख रहा है, क्या मैं जर्मनी देखूं या यूके, यूएस, एवरीवेयर द पिक्चर इज सेम. इट्स अ मिक्स पिक्चर. क्लियर क्लैरिटी नहीं है ऑन द बाइंग. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा अपना रिस्क मास्टर को देखेंगे, दैट इज B2 रिस्क मास्टर. लेट मी एडजस्ट द सेटिंग्स and risk master select under V2 and table analytical table size large. Now I'll select S&P 500. हम लोग weekly chart and daily chart and monthly, sorry, weekly, daily and 125 minutes chart पे रिस्क मास्टर को देखेंगे. सो रिस्क मास्टर इज इन द लिटिल, आने वाले दिन में फॉरवर्ड रिस्क जो दिखा रहा है दैट इज रिस्की दिखा रहा है. आने वाले दिन में हायर वोलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं. दैट इज अ वार्निंग कमिंग फर्स्ट टाइम इन द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में आने का मतलब इट कैन लास्ट क्वाइट अ लॉन्ग. अगर वीकली चार्ट में ये सब लो मतलब हाई वोलाटाइल हो गए. एंड लेट्स लुक एट द डेली चार्ट. डेली चार्ट में we have a high risk time, forward risk. This is a warning, but overall it was 4 counters were yellow. Currently 1 counter yellow, 1 is red. अभी भी broad safety है, but थोड़ा बहुत high risk आने वाले दिन में hint मिल रहा है. 125 मिनट which is more of a swing time frame. Swing time frame is broadly safe if India related volatility risk has gone up and the recession risk phase has started. So we are very close to the second leg of the recession, that is a crash leg. So now 125 minutes chart में मैं देखना चाहूंगा कि ये तो S&P 500 है, the major our जो bull. तो we want to see, I want to see how it has done. The V2 risk master 125 minutes comparison to this. So let's take a replay. Suppose I'll see from here 0.5 कर देते हैं स्पीड को. Let's see how it has done. So it was hinting that drawdown risk was there.
So it is volatile times, hinting आ रहा था. High risk time, risk rising. These are not great time to remain in the market. After the risk time, you'll gradually see things will turn green. That will be a good time to remain in the market as drawdown risk very high. You can see the S&P 500 is clearly in decline. ये जो अब देखिए पहली बार अब जो सेफ हो गया, इसके बाद आप चाहेंगे एक डाउ का स्ट्रक्चर, एक डाउ स्ट्रक्चर आप मिनिमम चाहेंगे, तब जाके सेफ मानेंगे. वी डिडंट हैव अ डाउ स्ट्रक्चर हियर, मतलब हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, डाउ थ्योरी. नाउ ड्रॉडाउन रिस्क हाई है, मतलब हम लोग नहीं चाहेंगे. वी वांट इट टू कम डाउन एंड उसके बाद नाउ इज कम डाउन. वी वांटेड अ डाउ स्ट्रक्चर, वी डिड नॉट गेट इट. See, again calmness, but we want once again the Dow structure, otherwise the calmness is not complete. It is continuously hinting एक के बाद एक काउंटर में that it is in trouble. We should be careful और मार्केट नीचे ही जा रहा है. अब देखिए शांत हुआ है. We need a Dow structure. It did not happen. Again market is going lower. So far risk master बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, as you can see. Now the risk is falling. It is safe. Now we need a Dow structure. It started going down. It is lower, lower. Now it broke higher. This is the Dow structure. First time a break has happened after everything has calmed down. This is a good sign that we can go for our equities. Till the time, once again it starts flashing red. जब तक red नहीं flash कर रहा है, I think we are good. So here is once again drawdown. जब भी ऐसा रिस्क बढ़ेगा, will remain careful. But overall देखिए रिस्क बढ़ नहीं पड़ रहा है ज्यादा, and we are coming back. Overall risk drawdown risk safe रहता है. ये red मतलब we'll have to be careful. Once the red appears, we'll reduce our quantity. So it gave a good signal. ये जो red signal बहुत देखिए calmness अब आया है Dow structure का confirmation, and the market is now going up. So इस तरह रिस्क मास्टर को देख के हम लोग ओवरऑल मार्केट रिस्क क्या है उसको समझ सकते हैं. एंड लुक्स लाइक द रिस्क मास्टर हैज डन वेरी वेल. तो हम लोग अब निफ्टी को भी देखेंगे. विल लुक एट द निफ्टी चार्ट. निफ्टी में ये जो ड्रॉडाउन्स हुए हैं, डिड वी गेट एनी प्रायर वार्निंग ऑफ द ड्रॉडाउन्स और नॉट? This chart is best applied on the S&P 500 because Nifty is a broken time frame, whereas S&P 500 future runs from almost पूरा दिन ही चलता रहता है. So it is good to apply on that chart. But with Nifty chart से भी I think we'll be able to gain some. यहाँ पे देखिए हाई दिखा रहा है एक्सट्रीम. अब वो फिर से सेफ हुआ. Once it is safe, that is a good time relatively. Warning, high risk time. देखिए लाल हो गया. It's going up. थोड़ा warning मिल रहा है. This is a big drop. उस दिन का ब्रेक हुआ था. It is going up, but देखिए रिस्क कम नहीं हो रहा है. Risk is remaining. Drawdown risk very high. Significant red flashing हो रहा है चारों तरफ. We need the meters to come down. Like right now it came down, and now we had a beautiful move. Now we need a Dow structure. Unless we have a Dow structure, we cannot confirmly say things are over. So the risk इधर उधर flash कर रहा है, but Nifty has also not given a Dow structure breakout to confirm that the risk has now faded. But overall, it has done well to warn us about this risk. Also, अब ये market relatively safe हो जा रहा है. तो जितना मुझे दिख रहा है कि it is the risk master is doing awesome in giving you warning. I am 100% sure कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रेनबो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स,
आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ड्यूरिंग दिस मेजर ड्रॉडाउन जो क्रैश होगा ड्यूरिंग दिस फेज। रिस्क से बचने के लिए दिस मीटर विल बी अ क्लासिक वन। सो जो लोग भी अभी भी अप्लाई नहीं किए, यू आई विल रिकमेंड यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस B2 रिस्क मास्क। So that's the picture from global market. So all the best to you, to all of you. Thank you so much for watching my videos on a regular basis. और एक बात, किसी का सुन के ट्रेड मत कीजिए, इंक्लूडिंग माइन। अब देखिए मैं भी लॉस करता हूं, मैं यूरोप शॉर्ट में लॉस कर चुका हूं। सो नेवर एवर लिसन, क्योंकि मैं ऑलवेज बता नहीं पाऊंगा कब मैं एग्जिट कर रहा हूं। एग्जिटेड S&P नैस्डैक, आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू इन्फॉर्म। This video is just a guide to the rainbow setup users, so that they can do well. So that's all, friends. Thank you so much for watching. All the best to you from my side, and as always, happy trading.